Good morning. Okay. So, have you tried some questions at home? Not yet, sir. We'll do today or tomorrow, sir. I'll do today or tomorrow. Okay. Today, I'll finish this topic. Okay. Sir, is assignment problem part of transportation problem? The same chapter? Okay, let us start. Hello. Hello. काय करू वाळलेलं नाही ना पोरी गाड्या माझ्याच राहिले Hello. Okay. Shall I start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. Okay. Now, this is a 5 by 5 assignment problem. Now, to solve assignment problem by Vogel's approximation method, the first step is to check whether assignment problem is balanced or not. Okay. Now here, Sir, I can't see the board, sir. बोर्ड नहीं दिख रहे? No, sir. What about others? Yes, sir. No visibility of the board. नाही दिखत अरे. Oh.
Now we can see, sir. Now I can see, sir. Yes. Okay. Now this is the second question. I just copied on my whiteboard. Yesterday I shared one PDF file with you. Okay. This is the second question. Right. Now to solve assignment problem, first we have to check whether it is balanced or not. Now in this question, we have 5 rows and 5 columns. So this assignment problem is balanced. Okay. Now let's apply Hungarian method to find optimum solution of this assignment problem. Right. Now, what is the first step? First, we'll apply row reduction. First step is Row reduction, then column reduction, and then assign the zeros. column reduction. Okay. In row reduction, what we do, we pick up a smallest element of each row and subtract that element from all other elements of that row. Okay. For example, in the first row, the smallest element is 5. So we'll subtract 5 from all other elements. Okay. So it gives me the opportunity cost for not using the best opportunity. Here, best opportunity is this one, 5. Okay. So if I do not use this opportunity, in this case, my cost would increase by 2. Okay. In this case, it will increase by 4, 3, and 6 respectively. Okay. So this is the purpose why we perform row reduction. Okay. So subtracting 5 from all elements, we get 2, 0, then 4, 3, and 6. Okay. The smallest element of second row is 7. Subtract 7 from all other elements, we'll get 2, 5, 0, 4, and 3. Okay. Third row, the smallest element is 4. Subtract 4, we get 4, 1, 0, then 2, and 5. Okay. Subtract 3 from all elements of the fourth row. 4, 0, then 3, 6, and 2. Okay. Smallest element of fifth row is 4. Subtract 4 from all elements, we'll get 0, then 2, 3, 1, 7. Okay. Now this process ensures that there is minimum 1 0 in each row. Okay. Now we'll perform similar operation for columns. Okay. This procedure is called as column reduction. Now in this method, what we'll do, we'll pick up smallest element from each column and subtract it from all other elements of that particular column. Okay. Now in first column, we have single 0, smallest element is 0. So if we subtract 0 from all other elements, the first column remain unchanged. Similarly, second column remain unchanged. Third column remain unchanged. In fourth column, the smallest element is 1. So after subtracting 1 from all elements of fourth column, we get 2, 3, 1, 5, and 0. Okay. Smallest element of fifth column is 2. So subtract 2, we'll get 4, then 1, 3, 0, and 5. Okay. So these two steps ensures that there will be at least 1 0 in each row and each column. Okay. Now these two steps are one-time activity. इसको आपको एक बार perform करना है, and then will enter into an iterative process. Okay. Third step and subsequent steps are
iterative steps. Okay? So we'll repeat further steps until we arrive at optimum solution. Right? Now let's do the assignment. कैसे करना है? Okay. रोज में 0 देखना है पहले. हाँ. Scan Then rows column. 1. Correct. Now in the first row we have single 0. So we'll assign machine 1 to job 2. Okay. Now because job 2 is already assigned, so it cannot be assigned to machine 4. Though we have 0 over here, but job 2 cannot be assigned to machine 4 because already it is assigned to machine M1. So this 0 is useless for further assignment. So we'll cross this 0. Okay. We'll go to second row. In second row we have single 0. We'll make an assignment. इसको क्रॉस करेंगे. Okay. तो ये vertical line होगी. This is second vertical line. Fine. In third row we do not have any 0. In fourth row there is single 0. तो यहाँ पे हम assign करेंगे and we'll draw a vertical line. In fifth row there are 2 zeros. Okay. So we'll skip this row and then scan columns one by one. Now in first column we have single 0. So we'll make an assignment and cancel out this 0. Okay, that's it. Now all zeros are either enclosed in a rectangle or crossed out. Okay, so assignment is done, but still this is not an optimum solution, or this is not final solution, because out of 5 machines only 4 machines are assigned, yet machine M3 is not assigned. Right? तो आगे क्या करना है? Next step. So जो uncovered cells है, the least one you got a minus. So here the least is uncovered is 1. All You got a minus 1 from elements. all the uncovered. Correct. From all uncovered elements, we'll pick up the smallest element. The smallest element is 1. Okay. So what we'll do, we'll subtract this 1 from all uncovered elements. Okay. And add the 1 at the intersection of the lines. Okay. Now intersection यहाँ पे 3 जगह पे है. 1, 2 and 3. Okay. So we'll add this 1 at these 3 locations. Covered है. We'll keep those covered element as it is. Okay. बाहेर जाऊ नको. Fine. Let's update the matrix. So 2 minus 1. Sir, 1 1 3 3. हाँ. 1. कंटेनमेंट जोन निघाले सर का. 1 1 3 3. Now this is covered element, so we'll keep this 0 as it is. Okay. It is not at the intersection, so this 0 will remain as it is. Then similarly these elements 0 5 1 0, 0 5 1 0 will remain as it is. Now this 2, though this 2 is covered, but it is at the intersection, so we'll add 1 at this in this particular cell. So 2 plus 1 is 3. Okay. Then 4 0 रिचार्ज 0 मारायला 4 0 0 3 as it is arranged, and here we'll add 1. Okay. Now these are uncovered elements. So we'll subtract 1 from all uncovered elements. So we'll get 1 2 0 4. 1 2
0, 4. And this 0, we'll keep it as it is. Okay. Now, last column, all elements in the last column are covered. So we'll keep these elements as it is. Okay. But here we'll add 1. We'll get 6 over here. Okay. Now do the assignment. Okay. Let's do the assignment. Now in first row, we have single 0. So assign job and cross zeros, if any, in the second column. Here we have single 0. So make assignment, cross this. Okay. So vertical line here, this is second vertical line. In third row, we have single 0. So make assignment, cross this 0. Okay. In fourth row, again we have single 0. If there is another 0 in the fifth column, we would have crossed it. So take line vertical as a line. Okay. And in fifth row, we have single 0. 3 ho gaya. Okay, that's it. Assignment is done. All zeros are enclosed or crossed out. Okay. Now here all 5 machines are assigned. Okay. Therefore, the current solution is optimum. So this is the optimum solution. Write optimum solution in a prescribed format or in a tabular format. First column में आपको लिखना है machines. Okay. Machines M1, M2, M3, M4 and M5. Then jobs. M1 is assigned job J2, M2 is assigned job J3, J4, J5 and J1. And cost of assignment. Refer original matrix. So 57654. 5, 7, 654. 5, 6, 5, 4. Okay. So the total is 27. 27. So total cost of assignment is 27. Okay. Fine. Any doubt? This is what we have discussed yesterday. Okay. This is plain example. कोई उसमें complications नहीं है. Given assignment problem was balanced. That too, minimization. The objective was the minimization of the total cost of assignment. Okay. Now we'll move to a little bit complicated sums. Now next sum. Next sum is a 6 by 5 assignment problem where we have 6 operators O1, O2, O3, O4, O5 and O6. Okay. And 5 jobs J1, J2, J3, O1, O2, O3, O4, O5 and O6. Jobs J1, J2, J3, J4 and J5. Okay. The first row is 6, 3, 5, 5, 6. 6, 3, 5, 5, 6. Second row 4, 5, 8, 7, 8. 4, 5, 8, 7, 8. Third row 7, 8, 6, 9, 7. 7, 8, 6, 9, 7. Okay. Fourth 6, 5, 5, 4, 9. 6, 5, 5, 4, 9.
948, 10, 10, and sixth row is 57468. 57468. Okay. ओके क्या करना है? डमी जॉब क्रिएट करना है सर. Correct. Here we have 6 machines and 5 jobs. So this is a 6 by 5 assignment problem. So to make it balanced, we should have one more column, right? So we'll create a dummy job. Because this dummy job is neither assigned to O1 nor to O2 nor to O3, etc. So the actual cost of assignment would be 0. Okay. So in dummy column, we assume that the cost of assignment is 0. Okay. Now rest of the procedure is same. अब यहाँ पे एक benefit है because each row contains 0. So after row reduction, you will get same matrix. Correct. So there is no So, point sir, in रो रिडक्शन नहीं करना है, राइट? correct ना, करने के बाद भी यही मैट्रिक्स मिलेगा because if you subtract 0 from all elements, you will get same Exactly. matrix. Correct. So we'll do column reduction. In the first column, we have the smallest element is 4. So subtract 4 from all elements. What we get? 2, 0, 3, 2, 5, and 1. Second column, smallest element is 3. Subtracting 3 from all, we get 0, 2, 5, 2, 1, 4. Okay. Minima is 4. Subtract 4, we get 1, then 4, 2, 1, 4, 0. Okay. Again, minima is 4, 1, 3, 5, 0, 6, 2. Minimum is 6, 0, 2, 1, 3, 4, 2. Okay. So after row and column reduction, you will get this matrix. In fact, in this question, we haven't performed row reduction because each row contains 0. So it is not necessary to perform row reduction for this particular example. Okay. Now let's do the assignment. Now in first row, we have multiple zeros, 3 zeros. We'll skip first row. Then in second row, also we have multiple zeros. So we'll skip second row as well. In third row, we have only 1 0. Okay. So we'll make an assignment and cross all zeros in
the fifth column. Okay. Now in fourth row, we have only 1 0. See, there were 2 zeros, but one out of 2, 1 0 is already crossed out. Fine. So now we have only 1 0 in the fourth row. So make an assignment. Here, vertical line ऐसे here. Fine. Then in fourth row, in fifth row, there is no 0. In fourth row, we have only 1 0. So make an assignment and draw vertical line. Okay. Now we'll scan columns one by one. In first column, we have single 0. We'll make an assignment. And अगर कोई यहाँ पे 0 होता तो we would have crossed it. So I'll draw horizontal line like this. In second column, we have single 0. So assign it and cross this 0. Okay. All zeros are either enclosed or crossed out. So we are done with assignment, but this is not an optimum assignment schedule because out of 6, only 5 operators are assigned. Okay. So we'll go for second iteration. अब second iteration में क्या करना है हमें? Among all uncovered elements, pick the smallest element and subtract it from all uncovered elements. Okay, so these two rows and these two columns and this column. Okay, ये element मेरे uncovered है. So remember, this is covered. ये vertical line ली मैंने. Fine. Among uncovered elements, smallest element is 1. So subtract 1 from all other elements. So यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 and 1 4 0 4 1 0 3 0 2 3 1. Okay. Now intersection में मुझे वो same element I have to add. So यहाँ पे हो जाएगा 2. Here also we'll have 2. यहाँ पे हो जाएगा 5. यहाँ पे हो जाएगा 4. And here at both the places we'll have 1 1. Okay. 0 0 0 0. Okay. 2 1 4 0. 2 1 4 0. 5 0 6 2. 5 0 6 2. Is 0 2 as it is. 0 2 2 0 0. Okay, fine. This is updated matrix. Now let's make assignments. In first row, we have 2 zeros. So we'll skip the first row. Second row, single 0. Make assignment, cross this 0. And in third row, we have 2 zeros. Skip, 2 zeros, skip, 2 zeros, skip, 2 zeros, skip. Now scan columns one by one. No 0, 2 zeros, skip, single 0. Make assignment, cross this 0. Okay.
single zero, assign, cross. Okay. Here we have 2 zeros, skip, 2 zeros, skip. Okay. Again, scan rows, 2 zeros, skip, 2 zeros, skip, 2 zeros, skip. Again, if we scan columns, we get 2 zeros, then no zero, no zero, 2 0, 2 0. Okay. तो यहाँ पे डेडलॉक लग गया. Fine. This situation is referred as a tie in assignment problem. Okay. Now, अगर tie आती है, so it indicates that the assignment problem has alternate solution. Okay. ये ध्यान में रखो. जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने अल्टरनेट सॉल्यूशन का केस डिस्कस किया था. Okay. Similarly, assignment problem may have multiple solution. Okay. If assignment problem has multiple solution, then this type of situation may occur. Okay. अब यहाँ पे क्या है? Deadlock लग गया. Only 3 jobs are assigned, and still there are many zeros in the matrix, and those zeros are neither enclosed in a rectangle nor they are crossed out. Okay. So this indicates that assignment problem has alternate solution. Okay. Now, to get rid of this tie, what we'll do, we'll select any one zero from the matrix randomly. Okay. Now, if I select this zero, okay. Now, to break tie, क्या करना है मुझे? I'll select any zero randomly. See, while scanning rows one by one, if we select a zero, then we used to cross out all zeros in that column. Similarly, if we are scanning columns one by one, and if we make an assignment, then we cross all zeros in that particular row. Okay. Now, because here we are breaking tie arbitrarily, we don't know whether we are assigning operators to job or jobs to operator. Okay. Operators हम assign कर रहे हैं to the jobs. It means that we are going row by row. If we are assigning jobs to operator, then we are going column by column. Okay, but यहाँ पे मुझे पता नहीं कि whether I am assigning operators to job or I am assigning jobs to operator, right? So in this case, when I break the tie, what I'll do, I'll cross out zeros in the corresponding row as well as zero in the corresponding column. Okay, got it? How to break the tie? ये समझ में आ गया? सपोज बाय चांस आप किसी डेडलॉक में फंस गए तो क्या करना है? सिलेक्ट एनी वन जीरो रैंडमली. कोई भी एक जीरो. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन चूज दिस वन और दिस वन और दिस वन. कुछ भी आप चूज कर सकते हो. ओके. सिलेक्ट एनी वन जीरो रैंडमली एंड क्रॉस ऑल zeros in the corresponding row as well as corresponding column. Okay. And again repeat the same procedure. Scan rows one by one. No zero, no zero, 2 zeros, so we'll skip. No zero. Now here we have single zero, so I'll make an assignment and cross out this zero. Okay. No zero, no zero, no zero, no zero, no zero, single zero. Okay. Make an assignment. Right. Now see here, all zeros are assigned, enclosed or crossed out. And we can see there are 1, 2, 3, 4, 5, and 6 assignments. So this is an optimum solution. Okay. Now let's calculate the cost of assignment for this particular assignment. Okay. So operator यहाँ पे O1, O2, O3, O4, O5, O6. Jobs J2, J1, J5, O4 is J4, O5 dummy, and O6 is J3. Cost of assignment O1, J2, O1, J2, 3 and 4, 3, 4, okay, 4, 5,
3, 4, 7, 4. Right. 7. 3, 4, 7, 4, and 4. 4. Okay. The cost is 7, 14, 14, 22. Okay. Assignment cost is 22. Okay. सर ये कॉस्ट किस तरह से आप अराइव करते हो यहाँ पे? कुछ मल्टीपल फैक्टर है क्या यहाँ पे? नहीं, मल्टीपल फैक्टर नहीं, ये जो लोकेशन है ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स में रेफर करो ना, क्या वैल्यू यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है ना, हाँ, उसमें Okay. यहाँ पे इस लोकेशन पे वैल्यू क्या है चेक करो ना. ओके. ओके, ठीक है. नाउ दिस इज वन सॉल्यूशन. Solution number 1. Fine. Now, while making assignment, we came across the situation where there were multiple paths, okay, or multiple ways to find optimum solution, and we have choose one solution, one way arbitrarily. Okay, so if we would have choose different zero to get rid of the tie, we may have got the different assignments. Okay, now let's try another way. Tie कहाँ पे आई थी मेरी? I think ये नहीं था. This was not there. Okay, 0. ये भी 0 नहीं था. And then tie कहाँ पे थी? Sir, O2 J1 में था. O2 J1 was assigned. O4 J4 was assigned, and O6 J3 was assigned. O6 J3 was assigned. मतलब ये नहीं था assigned. ये नहीं था. Okay. फिर ये भी डमी cross वाला भी होगा. नहीं था. डमी वाला भी नहीं था assigned. Okay. ये 0 So था. cross कौन सा रहेगा? J1 O6 या O6 J1 cross था. Fine, fine. O4 dummy and ये O6 तीन dummy. असाइन थे, बाकी कोई भी ऐसा नहीं था, राइट? करेक्ट ना? Yes. नाउ इफ आई चूज दिस वन, तो क्या करूंगा मैं? आई वुड हैव क्रॉस दिस एंड दिस. ओके, लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन. नो जीरो, सिंगल जीरो, तो मेक एन असाइनमेंट. इसको ये क्रॉस हो जाएगा. नो जीरो, single assignment, single zero, so assign it. Okay, now we have got different assignment. Okay, now let's try out the total cost. The total cost must be 22. The solution number 2. Now for this particular assignment, okay, assignment kya hai? O1 J5, O2 J1, O3 dummy, O4 J4, O5 J2, O6 J3. Okay. Now, O1 J5. O1 J5 is 6. Okay. O2 J1 4. 4. Fine. This is 0. O4 J4. 4. O4 J4 is 4. O5 J2. O5 J2 4. is also 4. 4. And 4. And 4. Okay. Say the total in this case also 22. Okay. So solution number 2 is alternate solution to solution number 1 and vice versa. Okay. So solution 1 and solution 2 are alternative to each other. Okay. एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप यहाँ पे स्टकअप करोगे, बट आपने सॉल्व ही नहीं किया घर पे, तो कैसे होगा?
Okay, now let's solve question number 5. Okay, मैं dictate करता हूँ, you just write down. Shall I? Yes, sir. Yes, sir. A marketing manager has 5 salesmen and 5 sales districts. Considering the capabilities of salesmen and the nature of districts, the estimate made by the marketing manager for the sales per month, in bracket, in 1,000 rupees. For each salesman in each district as follows. Okay. Salesman 1, 2, 3, 4, 5 salesmen, and districts A, B, C, D, and E. Okay, and the figures are 32, 38, 40, 28, 40, 28, 40, 28, 40, and 40, 24, 28, 40, 24, 28, 21, 36. 21, 36. Third row is 41, 27, 33. 41, 27, 33. 30, 37. 30, 37. Fourth row 22, 38, 41. 22, 38, 41. 36, 36. 29, 33. 40, 35, 39. 40, 35, 39. 39. Okay. Fine. Now here the question is, find the assignment of salesman to the district that will result in the optimum sales. Okay. See here we want to assign salesman 1, 2, 3, 4, 5 to 5 districts. That क्या होना चाहिए? Assignment कैसे होने चाहिए? Balance. See here, ना ये balance है, ठीक है, but see what this figure represents. 32 यहाँ पे 1A32. What does it signify? उसका मीनिंग क्या है? If manager salesperson salesperson 1, correct, all figures are in 1,000 rupees. Okay. So if salesperson 1 is assigned district A, then his performance would be, or he can make a business of 32,000 rupees. Correct. Similarly, if one is assigned to C, then he will make a business of 40,000 rupees. Right. Now, what should be So the maximization, right? Correct. Maximization.
बट ऑलवेज अभी बहुत बार क्या होता है एग्जाम्पल में आपको मेंशन नहीं करेंगे वेदर इट इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन. ठीक, आपको जजमेंट लेना है. फाइन, बिकॉज these figures, these are sales figures. So to maximize the profit, आपको obviously क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, राइट. कभी कभी ये मैट्रिक्स देते हैं प्रॉफिट मैट्रिक्स, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव. इन दिस केस ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स. ओके, नाउ हंगेरियन मेथड जो हमने डेवलप की है, जो डिस्कस किया है, now the Hungarian method is developed for minimization purpose. मतलब default objective of assignment problem is to minimize the total cost of assignment, but here the problem is exactly opposite, right? Here we want to maximize the cells. So you have two options. One is either modify the process or modify the method, or second alternative is modified the problem. Okay, तो प्रॉब्लम को मैनिपुलेट कैसे करना है, सिमिलर वे जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, राइट. टू कन्वर्ट गिवन maximization assignment problem into minimization assignment problem, what we'll do, will convert it into a relative loss matrix, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किया था, याद है. टू कन्वर्ट इट मैक्सिमम नंबर लेके माइनस करना है, मैक्सिमम नंबर से हम डिफरेंस लेंगे, राइट. तो इफ यू लुक एट द मैट्रिक्स, मैक्सिमम है 41. ओके, मतलब 41 हम क्या कर रहे हैं, सी एज अ मैनेजर यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट परफॉर्मेंस from any combination. Okay, let it be 1A or 1B or 2B 2A etc. So best performance क्या है, 41. So as a manager you are expecting the same result from all possible combinations. Okay, so what is the difference between the expectation of manager and actual performance? That is called as relative loss. Okay, expectation is 41 and actual performance is 32. So there is a difference of 9. In fact it is 9,000, but हम 1000 ignore कर रहे हैं, सिर्फ figures लिख रहे हैं यहाँ पे. Fine. So the relative loss while comparing the assignment 1A is 9. Correct. Similarly in this case it would be 1. यहाँ पे हो जाएगा relative loss 0. यहाँ पे कितना हो जाएगा 19. Right. Maximum 41 था ना. Okay. 12. Yeah, here we have 12. Then 3, 17, 17, 14. 4, 3, 8. तो 14 रहेगा, 4 नहीं सर. कहाँ पे, अच्छा फिगर क्या था यहाँ पे, 37 था ना, 27 था. Okay. Then here 1, 13, 8, 0, 1, 13, 20, 11, 5, 6, 1, then 5, 4, 5 and 2. Okay. So this matrix is called as a relative loss matrix. ऊपर heading दे दो, चाहे तो एक sentence लिख लो. The objective of given assignment problem is maximize the cells. Okay. So to solve this assignment problem, first we convert given matrix into a relative loss matrix. Okay. So can you repeat, please, sentence? Okay. The objective of given assignment problem is to maximize the cells. Okay. Therefore, to solve given AP, first we convert the given matrix
given matrix into a relative loss matrix. Into a relative loss matrix. Okay. So now write down this relative loss matrix. And आगे की प्रोसीजर आपको पता है. Okay. So rest you can do. क्या करना है यहाँ पे सॉल्व. सर एक सम ले लेते क्या? यहाँ पे एक सम कर लेते सर ग्लास में. कर लो. आप कर लो अभी. Now I'm not going to do anything on the whiteboard. Okay.
सर इसमें दो सॉल्यूशन आते हैं, राइट सर? हाँ, हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे तो कॉम्बिनेशन निकलेंगे ना, आइदर दिस टू और दिस टू, ऐसे आ रहा है। एग्जैक्टली सर, बराबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप गेस कर सकते हो, 0 + 5 मिनिमम। देखो ना यहाँ पे ये दो कॉलम में 0 and 5, एंड मतलब टोटल तो 5 आ गया, इसका भी टोटल 5 आ रहा है, राइट? हाँ, तो क्या है सॉल्यूशन? सेल्समैन 1 का डिस्ट्रिक्ट सी है, सेल्समैन 2 का ए है, 3 का ई है, 1 का सी, 2 का ए, ई, 3rd का ई, हाँ 4th का डी एंड 5th का बी। एंड अगर ऑल्टरनेट करना है तो हाँ। 2nd और 3rd का ए और ई का एक्सचेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, ओके, ऑब्लिक ई ऑब्लिक ए, वो ही दो आ रहे हैं मतलब। हाँ वही दो, ठीक है। कॉस्ट, सर किया नहीं वो मैं सॉरी नॉट कॉस्ट, सेल्स। हाँ सेल्स है 40, हाँ फर्स्ट का करेक्ट, 40 है, ओरिजिनल सेकंड फिगर्स का है। 40 है। यस, Here you have to take original figures, जो given मैट्रिक्स है, relative loss मैट्रिक्स का नहीं लेना है आपको। हाँ 40, 40 40 37 हाँ 36 एंड 33 33, ओके। एंड ऑल्टरनेट कर आएगा। हाँ ठीक है, टोटल कितना अल्टरनेट का, या हाँ ठीक है, अल्टरनेट बाद में आप कर लो। इसका टोटल कितना आ रहा है? 6, 80 70 50 186 I believe। हाँ। सो मैक्सिमम सेल्स कितने होंगे? रुपीज, ओके। Don't forget to multiply answer 1,86,000। 1000, because all figures are in thousands. So maximum sales over here is 1,86,000. Okay. Okay. Now एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा आधा आपको बताऊंगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। द गिवन प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या करना है आपको? ओके, I'll read. Solve the assignment problem. The data given in the table refer to the production in certain units. Okay. See, पहले क्वेश्चन में क्या था? The given figures were sales figures. Okay, so obviously we used to we try to maximize the sales. अब यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन भी हम क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे दो चीज मिक्स की हुई है, एक तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, एंड सेकंड थिंग इट इज अनबैलेंस्ड, राइट? So Yes sir। unbalanced transportation problem, we used to make it balanced to apply Hungarian method. Okay, but Hungarian method is developed for minimization purpose. So first we convert transportation problem into minimization case, and then we apply Hungarian method, right? So यहाँ पे दिक्कत क्या होती है? स्टूडेंट पहले इसको बैलेंस करते हैं एंड देन कन्वर्ट इट इनटू मैक्सिमाइजेशन 1। तो बैलेंस करते हो तो आप वहां पे 0 0 ऐड करोगे, एंड इफ यू कन्वर्ट इट इनटू रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स, तो वहां पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू वहां पे आ जाएगी कॉलम में, राइट? तो आपको क्या करना है? फर्स्ट कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स, गिवन प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स, एंड देन मेक इट बैलेंस्ड, करेक्ट? इतना यहाँ पे ट्विस्ट है, थोड़ा सा समझ में आ गया? Yes sir। Because Hungarian method is developed for minimization, so first we convert problem maximization problem into minimization one, and then we'll apply Hungarian method. अब Hungarian method की पहली स्टेप है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं वो चेक करना है। ओके, सो इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेप, पहला आपको क्या करना है? तो कन्वर्ट इनटू रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स,
and then make it balanced. Okay, उल्टा करोगे तो एक्चुअली टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट? आपका सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट द करेक्ट प्रोसीजर इज टू make to convert given maximization problem into minimization one and then apply Hungarian method. Okay, मतलब उसके बाद आपको बैलेंस करना है. Okay, otherwise it is similar to the previous one. ठीक है, आई थिंक कोई डाउट है इसमें हंगेरियन मेथड में? क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है, सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम टू ऑप्टिमाइज द सेल्स. ओके, मतलब दिस इज आल्सो अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टेलर्स, 5 टेलर्स एंड 5 गारमेंट्स है, तो ठीक है, इट इज मिनिमाइजेशन 1. नहीं, sorry, optimize the production. Question number 7 is also maximization problem. See, because the figures in the table represent output per day. Correct. कौन सा टेलर कितना आउटपुट दे रहा है? Those figures are represented given in the table. So question number 7 का भी objective है maximize the output. मतलब all question number 5, 6, 7, 8 all are maximization problems. Okay. So hope you have no doubts in the assignment problem. हाँ, restricted वाला केस हमने डिस्कस नहीं किया, but for transportation problem we have already discussed. Okay. Suppose किसी केस में असाइनमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, डैश वैल्यू दी है वहां पे, तो क्या करना है? We simply take infinity sign over there and apply usual Hungarian method. Okay, तो infinity माइनस आप कुछ भी करो, वहां पे आपको नॉन जीरो वैल्यू ही मिलेगी, राइट? और अदरवाइज यू कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द मैक्सिमम कॉस्ट. ओके, सेम प्रोसीजर जो हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अप्लाई किया है, रिस्ट्रिक्टेड रूट्स वाला, सेम प्रोसीजर विल अप्लाई हियर आल्सो. ओके, क्या करना है? सपोज कहीं पे भी रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट है, से फॉर एग्जांपल सेल्समैन 3 डिनाइड टू वर्क इन सेल्स डिस्ट्रिक्ट डी. ओके, 3 सेल्समैन जो 3 है वो बोला है कि मैं डी में काम नहीं करूंगा, डिस्ट्रिक्ट डी में. इट मींस दैट वी कैन नॉट असाइन डिस्ट्रिक्ट डी टू द सेल्समैन 3. तो उस जगह पे हम क्या करेंगे? वी टेक वेरी हाई वैल्यू, और इफ वी टेक इंफिनिटी ओवर देयर, देन that particular cell will be ignored in the process of Hungarian method. Okay, so जहाँ in restricted assignment है, in that place we take very high value or infinity, so those cells will be ignored in the process of assignment. Okay, clear हो गया ये? Yes, sir. Hello. Yes, sir. ओके, हाँ, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल क्लोज दिस टॉपिक. हाँ सर, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है, ये कैसे पता चलता है सर? देखो, क्वेश्चन में कुछ हिंट देते हैं आपको, कभी कभी डायरेक्ट आपको देंगे. से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखा है यहाँ पे, जो मैंने शीट सर्कुलेट किया है, उसमें मेंशन किया है कि फाइंड असाइनमेंट, the last sentence of this question is find assignment of salesman to the district that will result in the maximum sales. Okay, तो मतलब ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का यहाँ पे क्लियर कट दिया है, बट इन सम केसेस आपको मेंशन नहीं करेंगे. सी इन एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया है? सॉल्व, सिर्फ बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम. सॉल्व मतलब आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है, राइट? एंड आगे क्या बोल रहे हैं वो? द डेटा गिवन इन द टेबल रेफर टू द प्रोडक्शन इन सर्टेन यूनिट्स. ओके, अब यहाँ पे देखो, सिंपल लॉजिक लगाना है. अगर आप मैनेजर हो किसी कंपनी के
एंड ये फिगर आपको प्रोडक्शन फिगर दिख रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है या प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना है? मैक्सिमाइज। करेक्ट ना? सो दिस प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन केस. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? द आउटपुट पर डे पर टेलर फॉर ईच टाइप ऑफ गारमेंट इज गिवन बिलो. मतलब आउटपुट दिया है, तो अगेन ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज द आउटपुट. करेक्ट. आउटपुट को मिनिमाइज तो नहीं करोगे आप, राइट? सो ये ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नंबर 8, ये क्या दिया है? रिप्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ सेल्समैन. करेक्ट. तो परफॉर्मेंस आप इंप्रूव करने की कोशिश करोगे ना, यस मतलब परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है. ओके. तो आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन. इसलिए देखो, ये बहुत इजी टॉपिक है असाइनमेंट का. असाइनमेंट प्रॉब्लम का बहुत इजी टॉपिक होता है, बट बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन से सॉल्व करेंगे, बराबर सॉल्व करेंगे, बट इन दैट केस यू विल गेट 0 मार्क्स, बिकॉज आपको जो करना है उसके एग्जैक्ट अपोजिट कर दिया आपने ना. मतलब जो बेस्ट डिसीजन होना चाहिए था उसके जगह पे आपने वर्स्ट डिसीजन ले लिया. मिनिमाइज, आपने आउटपुट को मिनिमाइज कर दिया, मतलब दैट इज द वर्स्ट डिसीजन. करेक्ट. सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, आपको क्या करना है? रीड क्वेश्चन केयरफुली. Check whether it is of minimization or maximization, and then apply Hungarian method. So be careful while solving assignment problem. ठीक है. आपको डायरेक्ट मेंशन नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देंगे कि मैक्सिमाइज करो. ओके. अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम आ गया तो आपका लक है. ओके. और कोई डाउट? नो सर. ओके. तो एंड करें सेशन को. आपको प्रैक्टिस करना है. तो नाउ आई डिक्लेयर द यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया. यूनिट नंबर 1 इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम. ओके. इन नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट सेकंड यूनिट. ओके.